Hello friends, welcome you all to my YouTube channel English Lovers. Friends, in this video I am going to take this essay How to Make a Speech, which is written by Edgar I. Baker, and we are going to see some multiple choice questions based on this essay. But before that, let us see what this essay is about. What is the central idea of this essay? So Edgar I. Baker covers several essential aspects of making a speech. This essay it serves as a ready reckoner for those who want to be a good speaker. जिनको एक अच्छा स्पीकर बनना है, अच्छी सी स्पीच देनी है, पब्लिक स्पीकिंग जिनको एक बहुत समस्या लगती है, उनके लिए ये essay एक रेडी रेकनर की तरह काम करता है. तो एडगर आई बेकर इस essay में एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए जब हमें एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए, तो हमारे जेस्चर्स कैसे होने चाहिए, हमारा वॉइस, हमारी लैंग्वेज, हमारे स्पीच का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये सब बातें ये एडगर आई बेकर इस एसे में बताते हैं. तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो अभी हम देखते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज एडगर आई बेकर बाय प्रोफेशन? ए एक्टर, बी सिंगर, C. Principal, D. Music Director. So the correct answer is Edgar I. Baker was the principal of the Uganda College of Commerce. So he was the principal by profession. Next question is, which is the famous book written by Edgar I. Baker? कौन सी famous किताब एडगर आई बेकर ने लिखी है? Contemporary English, Communicative Skills in English, How to Speak Effectively, English in Use Today. So Edgar I. Baker has written a famous book by the name Contemporary English. So A is the correct answer. Next is, what is the meaning of the word verbiage? इन्होंने एक वर्ड यूज किया गया है ऐसे में, जो वर्ड है verbiage. तो इसका मीनिंग क्या है, ऐसा क्वेश्चन है. A, of great importance, B, use of lot of unnecessary words, C, disappointing, and D, using only few words. So the correct alternative is use of lot of unnecessary words. So verbiage means use of lot of unnecessary words. अगला क्वेश्चन है, what is an ideal delivery of words in a speech? एडगर आई बेकर स्पीच में 1 मिनट में कितने शब्द बोलने चाहिए ये हमें बताते हैं. तो कितनी होनी चाहिए आइडियल डिलीवरी ऑफ वर्ड्स इन अ स्पीच? तो अकॉर्डिंग टू एडगर आई बेकर, आइडियल डिलीवरी ऑफ वर्ड्स इन अ स्पीच शुड बी 100 to 120 वर्ड्स अ मिनट. 1 मिनट में 100 से 120 तक शब्द हमें बोलने चाहिए. सो सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, when you are called upon to say a few words, what should be your motto? एक फ्रेज है to say a few words, ये ऐसे में ये फ्रेज यूज की गई है. तो इसका मीनिंग अकॉर्डिंग टू एडगर आई बेकर क्या है? A, stand up, speak up and shut up. B, say only few words. C, pay attention to the mood of the listeners. And D, never open your mouth in public. So what should be our motto when somebody calls us to say a few words? Our motto should be stand up, speak up and shut up. So A is the correct answer. Next question is, what is acceptable in speech but not in writing? स्पीच में जो acceptable है, ऐसी कौन सी चीज है जो writing में acceptable नहीं है? Verbiage, humor, repetition या यूज ऑफ एब्यूजिव लैंग्वेज. ओके, तो रिपीटिशन जो है, रिपीटिशन एक बार अगर स्पीच में रिपीटिशन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर राइटिंग में रिपीटिशन हुआ तो ये कुछ अच्छी बात नहीं. सो सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलोक्वियलिज्म? कोलोक्वियलिज्म का मतलब क्या है? ए, सेल्फ इंपॉर्टेंस, बी, यूज ऑफ ह्यूमर व्हाइल स्पीकिंग, C, a particular way of standing, and D, an informal word or expression. तो colloquialism का मीनिंग क्या है? colloquialism का मीनिंग है an informal word or expression. So D is the correct answer.
नेक्स्ट इज ह्यूमर इज अ डैश थिंग टू हैंडल। एक सेंटेंस है, ऐसे में यूज किया गया, तो आपको फिल इन द ब्लैंक ऐसा क्वेश्चन है। ए डिफिकल्ट, बी ट्रिकी, सी कॉम्प्लिकेटेड एंड डी इजी। सो ह्यूमर इज अ tricky thing to handle. Humor is a tricky thing to handle. B is the correct answer. Next is when you are nervous before speaking, what should be done? What should be done according to Edgar I. Baker when you are nervous before speaking? Alternatives are given. A. You should apologize. B. You should make excuses. C. You should hide all traces of your nervousness. And D. You should tell your audience that you are nervous. तो क्या करना चाहिए अगर आप nervous है before speaking? तो आपको आपके जो traces of nervousness है वो छुपाने चाहिए, किसी को दिखाने नहीं चाहिए. So C is the correct answer. Next is what is a bad practice while speaking in public? पब्लिक स्पीकिंग करते समय ऐसी कौन सी हैबिट है जो कि बैड हैबिट है? Alternatives: A. Using plain everyday language. B. Watching your audience while you are speaking. C. Creating humor to break the ice. And D. Waving your arms like a windmill. तो ऑप्शंस A to C, फर्स्ट थ्री जो ऑप्शंस है ये तीनों भी गुड हैबिट्स है जो आपको पब्लिक स्पीकिंग में प्रैक्टिस करनी चाहिए. लेकिन ऑप्शन डी जो है वेविंग यूर आर्म्स लाइक अ विंडमिल, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, द मेजॉरिटी ऑफ फ्रेंचमैन आर गुड एट डैश देन द ब्रिटिश. तो यहां एक ऑब्जर्वेशन है राइटर का जो कि फ्रेंचमैन के बारे में है. तो क्या है वो ऑब्जर्वेशन? ऑप्शंस: ए राइटिंग, बी स्पीच मेकिंग, सी प्लेइंग फुटबॉल एंड डी प्लानिंग अ हॉलीडे. सो द मेजॉरिटी ऑफ फ्रेंचमैन आर गुड एट स्पीच मेकिंग देन द ब्रिटिश. ब्रिटिश के मुकाबले फ्रेंचमैन गुड स्पीकर्स है. Question number 12. A word-for-word transcription of a spontaneous discussion reads like a dash with all the participants talking to themselves in unfinished sentences. एक पूरा के पूरा सेंटेंस है ऐसे में आया हुआ, तो यहां आपको फिल इन द ब्लैंक करनी है. तो ऑप्शंस है मैड हैटर्स टी पार्टी, हैरी पॉटर्स टी पार्टी, हैरोल्ड पिंटर्स टी पार्टी एंड जेरेमी टेलर्स टी पार्टी. So A is the correct option, that is Mad Hatter's Tea Party. Next question, what is not a hallmark of a good speech? A. The use of plain everyday language. B. Significant pauses. C. Brevity. D. Fidgeting. Okay, तो ऑप्शंस A to C, फर्स्ट थ्री जो ऑप्शंस है वो तीनों के तीनों हॉलमार्क्स है गुड स्पीच के. गुड स्पीच कैसी होनी चाहिए ये तीनों बता दे. लेकिन ऑप्शन डी जो है फिजेटिंग, दैट इज मेकिंग अनईजी मूवमेंट्स ऑफ योर बॉडी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. सो डी इज ऑप्शन डी, दैट इज फिजेटिंग, इज नॉट अ हॉलमार्क ऑफ अ गुड स्पीच. Question number 14. What example does the writer give to emphasize his point of repetition in speech? Okay. तो ऐसे में एक जगह ऑथर हमें रिपीटिशन स्पीच में कैसा होना चाहिए इसका एक एग्जाम्पल देते हैं. तो कौन सा एग्जाम्पल वो देते हैं? ऑप्शंस आर गिवन. ए लर्निंग टू टाइप ऑन अ कीबोर्ड of a typewriter. B. Learning to drive a car. C. Learning to swim. And D. Learning to make a tomato soup. So, option A, that is learning to type on a keyboard of a typewriter, that option is correct because the writer gives example of how to learn a keyboard of a typewriter. And the last question, question number 15. What is not a common aspect between speech and writing? स्पीच और राइटिंग में ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जो कॉमन नहीं है? मतलब यहाँ जो चार ऑप्शंस है उसमें से तीन ऑप्शंस जो है वो कॉमन एस्पेक्ट्स बताते हैं और एक ऑप्शन है जो कि कॉमन एस्पेक्ट नहीं है स्पीच और राइटिंग में. क्या है वो ऑप्शंस? ए, अ गुड बिगिनिंग, मिडल एंड एंड.
B. A logical flow of thoughts and ideas from one point to the next. C. Engaging the attention of the reader or listener from the first moment. And D. Using facial expression, gestures to convey the meaning. तो पहले जो तीन ऑप्शंस है, तीनों ऑप्शंस कॉमन पॉइंट है स्पीच और राइटिंग में. ओके, लेकिन जो ऑप्शन डी है, यूजिंग फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स टू कन्वे द मीनिंग, ये सिर्फ कहां पॉसिबल है? ये सिर्फ स्पीच में पॉसिबल है, ये राइटिंग में पॉसिबल नहीं है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए. और हाँ, अगर आपके कुछ कमेंट्स है, सजेशंस है, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं. तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.